मार्केट में ना बहुत सारे बच्चे हैं, दे आर प्रो आई एम्स। आई मीन लाइक कुछ भी दो भाई आई एम्स में, हम तो आई एम ही ज्वाइन करेंगे। कि आप लोगों ने आई एम छोड़ के HNIBM पुणे क्यों ज्वाइन किया? This year, one of our elective courses in Central Monetary Policies, one of our former Deputy Governor RBI, Mr. Patra sir, he is coming. So he is one of the as a guest faculty. So I think that is one thing which is we have an edge over other IIM. So recently we had organized one FinTech Summit, so which basically was all about fintech ecosystem. Most distinguished session of the event was the keynote address given by second deputy governor of Bank of Mauritius. I think at NIBM we have that edge because our teachers, our professors who teach us, they also teach the banking professionals who are actually working in the industry. So they are basically giving them all the practical knowledge, and we are also learning from the same teacher. यू नेम कंपनी, हर जगह फाइनेंस की जॉब्स मिलती है। IT हो, फिनटेक हो, BFSI हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह आपको फाइनेंस मिलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ना मुझे लगता है अगर आपके पास वो ब्रांड है, जैसे NIBM पुणे एक ब्रांड है, और अगर वहां से मैं फाइनेंस पढ़ के आया हूँ तो स्काई इज द लिमिट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज गोना बी अ फाइनेंस का पॉडकास्ट। मेरे साथ NIBM पुणे के बच्चे बैठे हैं। बहुत सारे मिथ्स, मिसकंसेप्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे, एंड फाइनेंस करियर में आप कितना हाई लेवल तक जा सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। ये तीनों स्मार्ट है, बाय द वे, इनकी प्लेसमेंट लग चुकी है। वेरी सून दे गोना मेक मनी। सो आई स्टार्ट विथ यू। आई वुड लव टू अंडरस्टैंड योर कैट परसेंटाइल एंड क्या क्या कॉलेजेस आपके किटी में थे, एंड वो सब छोड़ छाड़ के फिर आप NIBM पुणे आए। सो कैन यू नेम दोस कॉलेजेस एंड परसेंटाइल? So my name is Isha Soni. I scored 93.18 in CAT, and Good. my other call was IMT Ghaziabad BFS, but I chose to be here because of the faculty and the curriculum that we have here. For now, I'll be interning at Barclays in Compliance Risk Department for my summer internships. वाओ। Yeah. So hello, my name is Prasoon Singh. Basically, I'm a BCom Honors graduate, and from Lucknow University. ओके। So and basically I left colleges like I'm Sirmaur, I'm Jammu, I'm Bodh Gaya, and I also left TAPMI, GIM, and IMT Ghaziabad BFS program for NIBM. And basically I'm currently at KPMG at Governance, Risk and Compliance Services. Yeah. Is it a technical role or a consulting role? It's more of a Or is it a techno consulting? Techno consulting. अच्छा, combo है। Yeah. That's good यार, very good. Over to you. So hello everyone, my name is Sarthak Dongri. So basically I am from Mumbai and I have completed my BCom from Mumbai University. And in addition to that, I am also qualified company secretary. And now talking about my CAT percentile, in CAT I had scored around 91.27 percentile. And in addition to that, I had also given ZAT, and in ZAT I had scored around similar percentile, which was in the range of 91.47 something. And now talking about my summer internship, so I have secured a summer internship at HDFC within the risk management group. बट यार तुम लोगों ने ना IIMs, बेबी IIMs वगैरह तुमने छोड़े हैं, राइट? एंड मार्केट में ना बहुत सारे बच्चे हैं, दे आर प्रो IIMs। आई मीन लाइक कुछ भी दो भाई IIMs में, हम तो IIM ही ज्वाइन करेंगे, है ना? प्राइवेट कॉलेजेस हो गया या फिर नॉन IIMs हो गया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमको IIM ही चाहिए। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू फॉर देम कि आप लोगों ने IIM छोड़ के HNIBM पुणे क्यों ज्वाइन किया? So I'll take that question. So basically, I joined NIBM Pune. Basically, I basically मेरे को enthusiastic बहुत था मैं, because I wanted to कि मेरे को finance में जाना था. So मेरा ये था कि अगर मेरे को finance करना है तो why not go for NIBM? Because I knew the curriculum of both the colleges, right? So I knew. Tell me more about the curriculum. Yeah, sure. So in the curriculum, like in our college, basically finance get introduced in the first year itself. Like as an IIMs, you get to choose your specialization in your second year, right? In first year, you are basically taught about general management. So here we are being taught about finance from the very first year itself, from the very first semester itself, I would say so. And so through that, I was very much intrigued about, and I actually wanted to join finance as my background is into BCom honors. So I wanted to do that. And so that is why I wanted to do my finance through NIBM, and Okay. I had my motivations of leaving IIM to NIBM. बट कमिंग बैक टू यू, राइट? बीइंग अ CS, आपको वहाँ पे बहुत एडवांटेज मिल सकता था IIMs में। व्हाटएवर IIMs दैट यू गाइस हैव लेफ्ट आर डिसेंट इनफ, राइट? तो फिर CS होने के बाद NIBM पुणे में आना ओवर एंड अबव IIM, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस?
So, sir, firstly, I would like to reiterate on the fact which was stated by Prasun that our curriculum is basically industry oriented, and I had क्या मैटर करता है करिकुलम? बच्चा बोलेगा IIM है भाई, IIM में जाना है. कैसे मैटर करता है? अब देखो ये CS है, ओके, इसने फोड़ा है, सो ही इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट करिकुलम, तो इसको सुन लेना पहले. सो कितना मैटर करता है करिकुलम इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस? Sir, I think in the world of finance, conceptual understanding is really important. Absolutely. And I think at NIBM we have that edge because our teachers, our professors who teach us, they also teach the banking professionals who are actually working in the industry. So they are basically giving them all the practical knowledge, and we are also learning from the same teachers. So I think we have that advantage over other IIMs. Yes, I am also aware of the fact that I am also have good professors, but considering the fact that our professors, they are more industry oriented, so that's why we get more conceptually and conceptually updated knowledge, and also we get all the latest we get basically are all we are informed about all the latest happening which is going on in the industry. So I think that's the edge which we have in at NIBM. Can you name few faculties, those who are at a very high level, been in the banking industry from last 25-30 odd years, and उनसे पढ़ने में मजा आता है क्लासरूम में? So, sir, the first name which I would like to take is Professor Arindam Bandyopadhyay. So, Okay. he's the well-renowned professor in the risk management industry. So, as he has also written various books. So, it's actually an honor to learn from him. And he's the best professor you can have for risk management. बट अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या प्रोफेसर्स है, उनकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता पाओगे कि सर इन लोगों से पढ़ना मतलब अलग लेवल है? Can you name a few? Can you name a few? Yeah, so we have Dr. Sanjay Basu. He's also known in the industry for his risk, for ALM risk basically, asset liability management. We have Tasneem ma'am, Tasneem Chirawala. She is known throughout the industry for statistics. We have people from RBI coming to consult her for various projects. So she is also very renowned. We have I have heard this. I'm not sure about it, okay, but I have heard this that RBI के जो बड़े दिग्गज होते हैं ना, वो यहाँ पे आके पढ़ाते हैं. Is that true? Yeah, actually, this year one of our elective courses in Central Monetary Policies, one of our former Deputy Governor RBI, Mr. Patra sir, he is coming. So teach is one of the as a guest faculty. So I think that is one thing which is we have an edge over other IIMs. So and we think that this is one thing that. We basically differentiates us with the other IIMs because we have the people who are actually managing the whole country's central bank system coming to teach us about the monetary policies of the country. So One question I want to ask you, and this is something students keep on asking me. वो कहते हैं कि किरण सर ये NIBM में ना बैंक मैनेजमेंट करके लिख के आता है, मुझे बैंक में जॉब नहीं करनी है, मुझे फाइनेंस करना है पर बैंक में जॉब नहीं करनी है. तो ये जो MBA कराते हैं, PGDM कराते हैं, वॉट एवर इज द कोर्स, राइट, क्या इसमें मुझे बैंक में ही जॉब मिलेगी? क्या मैं बैंक की टिपिकल जॉब्स करूंगा? सो आई वॉन्ट यू टू टेल देम कि बैंक मैनेजमेंट जो लगा है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? क्या सिर्फ बैंकिंग होता है या बाकी भी चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं यहाँ पे? यू कैन गो अहेड. So I like to take that. We have bank management, the name of the course being banking and financial services. It's not just restricted to banks. We have consultancy firms, we have EY and KPMG which are coming for internship right now. We have various NBFCs, Credila, Bajaj Finance, Hinduja Leyland, they are coming. Apart from it, international banks, BNY, Barclays. So I'll say that's not just restricted like what we have in our head, because all of us also had that doubt when coming into it. It's not just banking. Even IT domains like Capgemini, TCS, Infosys, they're also visiting campus because what is being taught here, it's risk, it's treasury roles. It is relevant in all industries because in one way or another, all the clients that you're dealing with, even in consultancy, they are BFSI clients. So I think that when coming to an IBM and thinking that it's bank management, it's not just restricted to that. It's a very vast domain. Okay, but do you guys learn financial statement analysis? Do you guys learn derivatives? Do you guys learn valuation? ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, कॉस्टिंग वगैरह सब ये नॉर्मल चीज़ें पढ़ाई जाती है, या फिर सिर्फ बैंक मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ाया जाता है? no, actually we are taught about all the things about Okay. finance. So from corporate finance to your valuations to your derivatives. So basically we'll get into our derivatives in the fourth term, taught by Dr. Tasneem Chirawala. So I think that is one thing we are also taught about. So not only derivatives, we are also taught about corporate finance by Dr. Richa Verma Bajaj and Dr. Elizabeth James.
and also we are taught about the valuations from Dr. Manik Raj sir. So he's an expert in our valuations and financial modeling. So, Okay. Yeah, we are taught about that. ओके सो हियर इज द क्विक थिंग आई टेल यू. सो जब बैंक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट द बैंक मैनेजमेंट ओनली. जो हमें लगता है कि हमें बैंकिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो बैंक्स आप देखते हो रिटेल बैंक्स, ये वो वाला नहीं है. यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, BFSI आता है, NBFCs आती है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आते हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स आते हैं, प्राइवेट बैंक्स आते हैं, फॉरेन बैंक्स आते हैं, PSUs आते हैं. एंड फाइनेंस में अगर आप देखोगे ना, तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस वगैरह तो हर जगह चलता है. वो बैंक में भी चलता है, वो IT में भी चलता है. सो ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि इट इज ओनली फॉर बैंक मैनेजमेंट. तो यहाँ पे आपको हर एक चीज पढ़ाई जाती है. जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है, A से लेके Z तक एवरीथिंग गेट्स कवर्ड यहाँ पे. नाउ एक्सक्यूज मी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, इवन यू मेड अ मेंशन रिस्क मैनेजमेंट, राइट. एंड हर एक बच्चा जो फाइनेंस करना चाहता है, सबसे पहली चीज हम सुनते हैं वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी. मतलब दैट गिव्स अस एक अलग लेवल का डोपामिन, दैट आई वांट टू डू वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, है ना. मैं DCF करूंगा, रिलेटिव करूंगा, राइट. एंड देन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट. वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ये वो फाइनेंस है जो हम फाइनेंस जब चालू करते हैं तब हम एक्चुअली इसका एक्सपोजर हमें मिलता है. बट अभी हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में. सो बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है, हमको तो मतलब MBA फाइनेंस कुछ अलग ही पता था. नाउ यू गाइस टेल देम दैट हाउ बिग एंड गुड इज रिस्क मैनेजमेंट. बिकॉज आपने बोला कैपजेमिनी है. अब कैपजेमिनी अगर आप देखोगे IT सर्विसेज कंसल्टिंग का एक जायंट है बाय द वे. वो यहाँ पे आता है और NIBM पुणे के बच्चों को फाइनेंस की जॉब देता है. वैसे देखा जाए तो कैपजेमिनी और फाइनेंस, NIBM पुणे, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है. बट फिर भी वो कंपनीज यहाँ पे आती है और जॉब्स देती है. लास्ट ईयर वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम C2C, अगेन ऋषि करके उसकी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, ही गॉट इनटू वन ऑफ द फिनटेक कंपनी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर वाला रोल. तो बहुत सारी चीजें हो रही है NIBM पुणे में. तो अभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं. टेल अस व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट. So yeah, basically risk management is all about managing or mitigating the risks that arise. Basically there are three risks mainly. Pillar one. नहीं, अभी हम फाइनेंस की क्लास नहीं करेंगे, इनको एकदम लेमन लैंग्वेज में बता दो कि सर रिस्क मैनेजमेंट में हमारे यहाँ पे क्या जॉब्स मिलती है. Sure. So basically in risk management, what we get is you are basically taught about how to deal with various kinds of risks that are in the market, like market risk, credit risk, operational risk. So these are basic three risks. And through how to mitigate those risks in an environment, basically how to mitigate those risks when a company is dealing with their clients and we're dealing with other the environment. So I think that is one thing we are taught about. And basically the roles that are coming on is more about, like, it's not just about like mainly about your core banking and finance roles, but all about your risk management roles as well, your treasury roles as well, and it's also linked towards your product management as well, because we are taught about the financial products as well. So through that product, financial products, when you know about a product, you can basically develop a product as well, right? So you're taught about product management in that sense. Right. Can you add something to this? So I would like to add one thing, that one of the prominent roles which we have in risk management at NIBM is modeling related roles, basically analyst related roles. So here at NIBM, like I mentioned, that we are taught risk management by Professor Arindam Bandyopadhyay. So at our classes, we are basically given hands-on exercise on how to do modeling. So this actually What modeling? Basically ECL modeling, expected credit loss modeling, all the modeling related to calculation of probability of default, etc. All that things. So we actually do all the things practically, so that actually helps us to crack the job interviews and get into the industry. Anything you want to add in? Yeah, I want to add that apart from risk roles, we also have treasury roles, which I don't think a lot of people know about Actually. before getting into a finance college. So in treasury role, if you are very enthusiastic about markets, if you are about market products, be it long term or short term, I think treasury roles are also something that a lot of students look out to when they come to NIBM, because we have very expert faculties for that as well. Okay, so ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला जो फंडा है ना, ये हर जगह चलता है. So आप फाइनेंस को दो एंगल में देखो. एक आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस वैल्यूएशन आ गया, एक तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट आ गया. इफ यू आस्क मी इन टुडेज डेट, सबसे ज़्यादा जो तुम्हारे जॉब्स है वो रिस्क मैनेजमेंट में ही मिलते हैं. टॉक अबाउट बार्कलेज, टॉक अबाउट वेल्स फार्गो, टॉक अबाउट JPMC, टॉक अबाउट मॉर्गन स्टैनले, बिकॉज अभी डेरिवेटिव्स आप अगले साल पढ़ोगे. ओवर द काउंटर OTC $1 ट्रिलियन का मार्केट है. इंडिया की GDP से भी बहुत बड़ा मार्केट है.
एंड सबसे बड़ी जॉब्स वहाँ पे मिलती है। तो वो एक रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ट्रेडिंग यू हैव रिस्क मैनेजमेंट, क्रिप्टो यू हैव रिस्क मैनेजमेंट, बैंक को जो बिजनेस बनाना है उसमें रिस्क मैनेजमेंट है। सो रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, राइट। तो नो डाउट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी करते हैं, हम वैल्यूएशन भी करते हैं एंड हम रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं। सो जिस बच्चों को, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस की जॉब मिलना थोड़ी डिफिकल्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप देखोगे ट्रेडिंग में अगर आपको जाना है, इट्स अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा। लाइकवाइज टॉप नॉच वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस वाली जॉब आपको करना है, देन यू गो टू एबीसी। बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह कंसल्टिंग कंपनी में आप वैल्यूएशन करते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह करते हो, बट आई थिंक दिस आर लाइक छोटा मोटा प्रोफाइल्स आपके पास होता है। बट रिस्क मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट गैमेट ऑल टुगेदर एंड मैक्सिमम जॉब्स यहाँ पे मिलते हैं। अब देखो फिनटेक वाली कंपनी हायर कर रही है, आईटी कंपनीज यहाँ पे हायर करती है, बैंक्स हायर करती है, एनबीएफसीज आर आल्सो हायरिंग हियर, राइट। सो यू कैन रिसर्च मोर अबाउट रिस्क मैनेजमेंट जो एनआईबीएम पुणे में एक्चुअली पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार एक्सपोजर क्या मिलेगा मुझे एनआईबीएम में जाके, मैं आईएम में चले जाऊंगा, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर है, क्लब्स है, मीडिया कमिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर कोई बच्चा फिनेंस एंथुजियास्ट है और एनआईबीएम में आता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर ही कैन गेट? So I'm also a part of a club called Vitarth. So it's a What is it? Vitarth. With Arth. Yeah. Okay. So it's the finance club of our college. So basically, I'm one of the team leads of one of the vertical heads. So it's the industry analysis vertical head. So in that, basically, what we deal is basically we take an industry every week, and we basically analyze about that industry. We find out the valuation of the industry. We find out about the projections of the financials of the industry. We prepare a credit scorecard of the industry as well. And we also prepare about what will be the future projections of the industry, right? So we think we basically prepare that as well, and we prepare a report about that, and we publish it. How often do you do this? So every week it's every Okay. Wednesday. Okay. Your committee does that. Yeah. That's a good exposure, yeah. Yeah. So actually that is what we are exposed to in NIB actually. Anything else? Events वगैरह? Yeah. Regarding the events, I think Sathya will take up. Sure. So just to add a few more things, so like Prasun has mentioned that he's part of Vitarth committee, so there are also various other clubs and committees which we have. Just to mention few, we have Vitt Nivesh committee, which is the investment club of NIBM. We have Consult club, which is everything about consulting related field. And now I would like to talk about few of the committees which we have. So we have admissions committee, media. That's fine. Committees हर जगह है, मुझे लगता है बच्चे स्मार्ट है उनको पता चलता है। आप मुझे बताओ आपकी जो कमेटी है उसने आपको क्या एक्सपोजर दिया? ऐसी चीजें बताओ कि केतन सर ये मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी लेवल पे जा सकता हूँ, एंड एनआईबीएम पुणे ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। So sir, talking about myself, I'm a part of the ISC committee, which is the Institutions Innovation Council, or basically we can say the entrepreneurship cell of NIBM. So our main objective is to foster innovation entrepreneurship in our college. So recently we had organized one FinTech summit, so which basically was all about FinTech ecosystem. So we had invited all the banking professionals, or basically all the professionals from the FinTech ecosystem. So therein we had basically conducted pitch deck sessions, we had conducted keynote sessions, panel discussions to give the audience idea about the FinTech ecosystem. And I would like to highlight one thing, that the most distinguished session of the event was the keynote address given by second deputy governor of Bank of Mauritius. So that was really important. So his address was mainly focused on how to foster the digital financial digital ecosystem across border, basically cross border financial ecosystem. So that is one thing. So we conduct all these sessions, so which give all the students and all the related professionals a knowledge about all the happenings which are going on in the industry. So that's one thing which basically can help the students. Okay. if they are from- Okay, last question for the day. I'll start with you. Why somebody should be choosing MBA Finance over and above marketing, HR, operations? I think if you're really enthusiastic about how money flows in the real world, that was my motivation behind it. Absolutely seeing how things work out. And secondly, it's a career path which has very steep growth. If you're good at it and you're going through it, in 10 years, you're going to have much more growth as compared to any other domains, be it marketing or HR. What do you guys? Yeah, for me actually it was something that actually made me much more enthusiastic about. Basically, is the finance domain is something which is changing rapidly and every day, right? And it's coming up with new challenges every day, like cloud being launched right now, it's being talked over all over the internet. So
I think that is one thing that we need to learn about. We need to adapt very quickly, right? And finance is also something that runs the core operations of any company, right? So I think that was one thing or one motivation for me to be a part of such industry. And I would like to add that finance is not something which you just go and do it. It's all about your personal liking. If you have that liking for finance, if you want to understand how financial markets work, if you want to understand about financial products, then I think you should pursue that field, because in finance, I think it's all about conceptual understanding. It's not just you go there and you understand things. You have to put in some hard work in there. So I think finance, you should go ahead if you want to understand how markets work, if you want to understand how modern digital ecosystem is, financial ecosystem is evolving. So I think then you should pursue finance. अच्छा, तो अभी इन लोगों ने एकदम सोफिस्टिकेटेड इंटरव्यू टाइप आंसर्स दिए हैं. मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, दिस लॉट ऑफ मनी इन फाइनेंस बाय द वे. सो जितने भी बच्चे कंफ्यूज्ड है, मार्केटिंग करूँ, HR करूँ, ऑपरेशंस करूँ, go for finance. You'll make shit lot of money eventually, and as rightly said by her, 10 years down the line you'll be at a very high level, because you name a company, हर जगह फाइनेंस की जॉब्स मिलती है. IT हो, फिनटेक हो, BFSI हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह आपको फाइनेंस मिलेगा. बट एट द एंड ऑफ द डे ना मुझे लगता है अगर आपके पास वो ब्रांड है, जैसे NIBM पुणे एक ब्रांड है, और अगर वहाँ से मैं फाइनेंस पढ़ के आया हूँ, तो स्काई इज द लिमिट. बिकॉज फाइनेंस में आई जस्ट थॉट आई मेक अ मेंशन ऑफ दैट. फाइनेंस में तुम्हारा ब्रांड मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज योर स्किल सेट. एंड इफ यू हैव अ ब्रांड विच इज लाइक फाइनेंस स्पेसिफिक, भाई सोने पे सुहागा. एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस टू द एस्पायरेंट्स, आपके जूनियर्स कुछ बताना चाहोगे? अभी वो भी फिलहाल टेंशन में है, जैड खराब गया, सीमैट खराब गया, कैट में परसेंटाइल कम आए हैं. एनी लाइफ एडवाइस, एनीथिंग? चिल करो, इतना कुछ नहीं है. मेरा भी बहुत सारी चीजें उधर ऊपर नीचे हुई थी, बट कुछ नहीं होता, चलेगा सब. आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाता है, बस तुमको गेम में बने रहना है. एनीथिंग यू वांट एडवाइस? So I would like to add that don't give up. So बहुत सारी चीजें होती है, मतलब कैट का रिजल्ट, जैड का रिजल्ट, it doesn't go in our favor, but life just goes on. You have to focus on your other things, like you have to focus on your interviews which are scheduled for. So accordingly prepare. So and I think if you give your 100%, then surely you will crack the best college. पर एक बात बताओ, अभी तुमको लगता है कैट वैट का रिजल्ट कुछ मायने रखता है अभी, या फिर वो सब पास्ट हो गया? सर हम तो भूल भी गए, पता नहीं अभी क्या था. वंस यू आर इन MBA ना, इट डजंट रियली मैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. व्हाट मैटर्स इज अ गुड प्लेसमेंट, एंड इवेंचुअली यू गेट इट इफ यू आर इन अ गुड ब्रांड. कूल है गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग सम टाइम. एंड गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, ये लोग अवेलेबल है लिंक्डइन पे. You guys can get in touch with them. They're very helpful and cooperative. You can ask them questions if you wish to. That's it from our side, guys. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye-bye.